रिकॉर्ड चालू कर लेना इस डेट पे वो भी लगा लेना You are currently the only person in this conference. You are now muted. कितने बजे से तीन खास ठीक है मैं किसको बताना अंकित हाँ तेजाब चाहिए इसमें भी रेड में जो ग्रीन वाले अच्छा उन्होंने बोला था कि वो इससे हो जाएगी सबके साथ अभी तक तो वो चीज आएगी हेलो कोई प्रॉब्लम बोल दिया नहीं गुड आफ्टरनून बच्चों आज से सबसे पहले आप ही मुझे बताएंगे आपकी फीस आ रहा है गुड आफ्टरनून आप चल की बच्चों को सुनती बाकी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे ना बाकी बच्चों को इंतजार होगा क्वेश्चन बनाए नोट्स बनाए देखो बच्चों लास्ट क्लास की सिंपलीफिकेशन बहुत कम हुआ था इसलिए आज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन थे ओनली 2 ये क्वेश्चन हुआ था
बार था तो फिर सॉल्यूशन नहीं हुआ होगा ये। करो ट्राई। ट्राई करा के आज एकदम सब कुछ एकदम नया हेयर स्टाइल है, नया दिन नया हेयर स्टाइल। कल के लिए क्या तैयारी करनी है? कल स्पेशल क्या होगा इसको देखो। मैं तो आज वाला रोटी पूछ रहा। आज बताओ, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है। आज सैटरडे है, कौन सा सैटरडे है? बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा बच्चों? फटाफट से करो, कुछ भी करना। देखो सिंपलीफिकेशन में कैलकुलेशन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बस। 15 अभी देखेंगे कितना होगा। भाई सब तैयारी करो बच्चों, तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, आंसर बताओ कितना होगा। आप ही बताओ, प्रसन्नता तो प्रिपेयर आप ही। 15 भाई ये क्वेश्चन होमवर्क में किया था, सबने सॉल्व कर दिया इसको। बोलो बच्चों फटाफट से। देखो जिन्होंने सॉल्व नहीं करा वो आप देख लो। 87.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 7/8 मल्टीप्लाई माइनस 462 से मल्टीप्लाई 6 में करो, फटाफट से बताओ कितना आएगा। मैं आराम से करो, कोई जल्दी। टू 772 इक्वल्स टू कितना होगा? 42x। अब आपको करना क्या है? 8 से डिवाइड करो बस। 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बताओ बच्चों? फटाफट से डिवाइड करो। हाँ 388 के बाद माइनस का साइन। 486 की मल्टीप्लाई 7 में करो। देखो यही तो कैलकुलेशन है जो आपको फास्ट करनी पड़ेगी, और उसे फास्ट करूंगा प्रैक्टिस से। 3 2 3402 minus 2772 equals to 42x। करो इन दोनों को सबट्रैक्ट, बताओ कितना आएगा? तो कैलकुलेशन भी करो बस, जैसे ही कितना करना। आजकल आप बहुत लेट आ रहे हो। 630 equals to 42x। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर ही सकते हो। अपॉन 42 7 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? x की वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क था और आप सबने कर दिया होगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? करो फिर फटाफट से इसको। याद ही करना पड़ेगा। 87/2 ये तो आपको पता है होगा। अब परसेंटेज वाली क्लास आपको
स्टार्टिंग से लास्ट तक करनी पड़ेगी डेली। यहाँ पर आप 2 से चेक करोगे इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में हमारे पास 2 है, फिर उसी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 7 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और बताओ आंसर कितना है। इतने देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था आपको कैलकुलेटर से पास तो। अब आंसर होना चाहिए। ये तो सच में सोच सीखा बच्चों, ये तो और देखो इसमें से कुछ भी नहीं करना। 92% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना होगा। 23/25 मल्टीप्लाई 225 प्लस 4 माइनस 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। 96 का 1/4 कितना होगा? 16 की बात का साइज 16 की बात फास्ट तो आपको बना ही नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट मत करो तो फिर फेल हो जाओगे। थोड़ा आराम से चलो। तो 111 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 25% की फ्रैक्शन किससे होगी? तो बच्चों अब नहीं आपको बार-बार ऐसे नहीं करना। 25/100 डायरेक्ट आपको याद करना है 25% इक्वल्स टू 1/4। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? का 8/1 भाई और किसी को डाउट? इसको सॉल्व करो। यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप करो थोड़ा सा ट्राई, ये थोड़ा सा ठीक है ये भी एकदम इजी। ऐसे करो देखो वेरी गुड इसलिए बना था क्योंकि आपने समझ गलत इसलिए बोला गलत है। भाई रवि आप 729 तो देखो 92 हां देखो सर
तो ये 6 5 6 पर है 9 की पावर बस करो ट्राई अभी देखिए आप एक बार ट्राई करो बच्चों सिंपलीफिकेशन का तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ तो किसी मैथ की कोई हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ तो बस कैलकुलेशन चाहिए देखो ये ना आपको याद करने पड़ेंगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कर लो बच्चों ट्राई या फिर जब मैं कराऊंगा उसके बाद नोट्स बनाने हैं आपके पास देखो 5 शायद बाकी लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 9 की पावर x प्लस देखो सिंपलीफिकेशन की कैलकुलेशन ही करनी है बस आपको कैलकुलेशन आराम से करो यहाँ तो हमारे पास टाइम ही टाइम अब देखो समझो जिनका आंसर नहीं आया या फिर जिनको नोट्स बनाने हैं वो समझो राइट हैंड साइड में है हमारे पास 9 की पावर x प्लस 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 9 की पावर कुछ बन जाए तो हम दोनों को कंपैरिजन कर देंगे मतलब y प्लस इक्वल्स टू x प्लस 2 भाई ऐसे ही तो कर सकते हैं हम इसको इसका मतलब अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में 9 की पावर के टर्म में कुछ बनाना पड़ेगा उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा देखो एक बात हमें पता चल गई हमें सब कुछ 9 की पावर में ही ब्रेक करना क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास है 9 की पावर x प्लस 1 इसका मतलब अब हमें सब कुछ 9 की पावर में करना है उसके बाद कंपेयर देखो क्या करो सबसे पहले तो इस 2 से ना इस 162 को डिवाइड करो आएगा 81 729 होगा 9 की पावर 3 9 की पावर 3 तो 9 की पावर -3 कितना होगा -9 भाई 9 की पावर 3 तो उसकी पावर -3 तो 9 की पावर -9 अपॉन 6561 है 9 की पावर 4 9 की पावर 4 तो उसकी पावर -4 तो कितना होगा अपॉन 9 की पावर -16 इक्वल्स टू 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर x प्लस 2 तो अब देखो क्या होगा 9 की पावर -9 प्लस 16 इक्वल्स टू 9 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9 की पावर x प्लस 2 तो हमारे पास ये कितना होगा 9 की पावर 7 into 9 की पावर x प्लस 2 देखो जब आप इस 2 को नीचे डिवाइड में लेकर आओगे चलो देखिएगा देखिए हमारे पास कितना होगा 9 की पावर 7 और 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 की पावर x प्लस 2 अब ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा 9 की पावर 7 इक्वल्स टू 9 की पावर x प्लस 2 अब देखो दोनों तरफ हमारे पास 9 की पावर है अगर बेस सेम है इसका मतलब पावर इक्वल होगी तो 5 इक्वल्स टू x प्लस 2 तो x की वैल्यू बात समझ आई बच्चों बोलो क्योंकि हमें सब कुछ 9 की पावर में ब्रेक करना है इसलिए याद करना पड़ेगा 9 की
इसको क्या लिखेंगे हम? ये तो आपको सबसे फर्स्ट क्लास में समझाया होगा। हमें सब कुछ 9 की पावर में ब्रेक करना है, इसलिए क्योंकि उसके बाद हमें दोनों साइड का कंपैरिजन करना है। इसलिए हमने करा क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में 9 की पावर कुछ हो जाए, उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? बना लो नोट्स आराम से, लिख लो। एक्स हो गया, बच्चों बनाओ आराम से, नोट्स बनाओ, करो। भाई फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में डाउट क्या एक्सप्लेन करना है? देखो हमने कुछ नहीं करा, राइट हैंड साइड में है 9 की पावर x प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 की पावर बना लिया, बस हमने यही तो करा इसमें। 729 होगा 9 की पावर 3, 6561 होगा 9 की पावर 4, और उसकी भी पावर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे -16, 9 की पावर 3 और उसकी पावर -3, कितना होगा 9 की पावर -9। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी 8, पावर हो जाएगी 8 में कितना होगा 9 की पावर -9 प्लस 16, उसके बाद ये जो 2 है इसको 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कंपेयर कर लो, x की पावर आ जाएगी 3। फटाफट से बताओ बच्चों, और थोड़ा और मजा आ रहा है? अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे। ये तो फर्स्ट क्लास में नोट करा है। हाँ निमेश अब बोलो आप। मैं तो फिर बताइए बोलो निमेश। तब तक बाकी सब इसको सॉल्व करो। ओके भाई देखो मैं तुम्हें ट्रिक नहीं बताऊंगा, जो आप करते हो ना मैं आपको वही समझा दूंगा, आप उसको मेथड में कैसे करोगे। एक ही मेथड से को मल्टीप्लाई करो, उसी की प्रैक्टिस करो। हाँ सिंपलीफिकेशन में करने के लिए बताना तो है, जब लास्ट के हमारे पास 10 या 15 मिनट्स बचे तो एक बार याद दिला देना चाहिए। हाँ अभी करके बाद में करना है, बाद में करना है, आपकी चॉइस है। हाँ ऐसे करो। हाँ वो मेरी याद है, धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी नहीं बताया, बताएंगे उसको।
इसका आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। देखो इसमें तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, 5 5 6 8 को 87 से डिवाइड करना है बस। देखो सिंपलीफिकेशन ना कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अपने माइंड को ना आप इतना प्रिपेयर कर लो, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अब आपको 5 5 6 8 को ओनली कुछ भी नहीं करना है, 87 से डिवाइड करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कितने टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कितना होगा 5 5 6 8 को जब आप 87 से डिवाइड करोगे तो 64। डिवाइड कैलकुलेशन इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और पास होना है तो पास होना है तो नहीं, पास तो होना ही होगा। 144 को नोट कर सकते हैं 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू x की पावर 1/2। 64 को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, 4 की पावर 3, क्योंकि हमें अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 12 इक्वल्स टू x की पावर 1/2, 16 इक्वल्स टू x की पावर 1/2। दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 256। समझ आई बच्चों बात। बच्चों मैं आपको खतिया बता के सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन डीआई नंबर सीरीज इनइक्वालिटी, ये 5 चैप्टर लेसन है जिनको आपको डेली करना है। आप पूरी मैथ में कुछ मत करो, बस इन 5 चैप्टर्स को ही कर लो, पास तो 100% होगा। तैयार हो गए, कुछ भी क्यों ना हो, मेंस में भी क्या आएगा, सप्लीमेंट दिया जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सिस्टम नहीं ठीक है, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से 2 बढ़ जाएगा तो x इक्वल्स टू होगा 256। अब आप बोलोगे कितना, नहीं फिर से लिखेंगे, बताओ। अब बिल्कुल हमने 60 देखो हमारे पास है पावर 3, तो हमने 64 को 4 की पावर 3 लिख दिया, तो फिर 3 से 6 कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 144, इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 2, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो हाँ बोलो सर, ब्रैकेट के अंदर आएगा फिर कट जाएगी तो मल्टीप्लाई कर दो। वहां ब्रैकेट नहीं था ना, वहां ब्रैकेट नहीं था ना, ब्रैकेट था लेकिन वो हमारे पास वहां भी मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे तो सेम है भाई, ये 1/3 में है ना, तो
भाई 1/3 है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास सिंपल 3 हो जाएगा। ये दोनों करते हैं। अब देखो, बताओ बच्चों, बात समझ आई इस क्वेश्चन की? देखो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, एक बस तुम के बारे में क्या समझ लो, वैसे आप तुमको मानना नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो टाइम बहुत कम है, तब देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, भाई राइट हैंड साइड में है हमारे पास x की पावर 1/2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म आएगी उसको हम स्क्वायर करेंगे, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बस तुक्का और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीत भी है। अगर टाइम कम हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करे तो एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप कर सकते हैं। बात समझ आई बच्चों? वैसे तुमका मानना नहीं है, बताओ आंसर कितना होगा? बोलो। नहीं वो तुमका ये मानना लो 30 भी है ना। सूरज ऊपर देख रहे थे वो नहीं कर पा रहे, तेरा तारीख का लाइव नहीं आ रहा है, तेरा तारीख का लाइव नहीं आ रहा। बच्चों फटाफट से करो, कोमल देखो चैप्टर्स तो धीरे धीरे होते ही रहेंगे, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा डिवाइड करना भी समझा दूंगा, अगर हमारे पास में बहुत बड़ी टर्म है तो उसको कैसे डिवाइड करें। इसमें तो आपको कुछ करना है, बताओ बच्चों फटाफट से आंसर। कैलकुलेशन फास्ट करो प्रैक्टिस से, बाय प्रैक्टिस। 11 बताओ बच्चों कितना होगा? 11 देखो 27 का स्क्वायर कितना होगा? लेकिन आंसर आप देखो तो शुरू है 729 multiply 609 plus 343 plus 171 equals to 100 plus x cube minus 431. So cheap सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 81 से मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आएगा? Plus 343 plus 171. ये तो 100 है और माइनस 431, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये कितना होगा? माइनस 100 प्लस 431 इक्वल्स टू x। अब ये कितना होगा देख लो, बस ऐड कर। अब देखो इसको ना, इसको पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल। अब देखो इसके बाद में यहाँ हमें इसे पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट देखो इसको 500 एज्यूम कर लो, डाउट खुद के बना के रोल पर पूछो, इसको 400, तो ये कितना हो जाएगा? भाई हमारे पास जो भी परफेक्ट क्यूब होगा तो 1300 के आसपास है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 11 जिसकी तुम 1331। आई बच्चों बात समझ?
इन सबको ना वैसे भी नॉर्मल भी देख सकते हो 486 को 500 एज्यूम करो इन दोनों के सम को आप 400 एज्यूम कर लो 431 को इसको भी 400 एज्यूम कर लो तो डायरेक्ट इन्हीं को ऐड करो 5 और 4 9 9 और 4 30 अब ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब 1300 के आसपास हो 11 की क्यूब होगी 1331 तो बस यही आंसर होगा वैसे इसको ऐड भी कर सकते हो बताओ बच्चों फटाफट से बात समझ आई बताओ मेरा आंसर रिकॉर्डिंग हो रही है भाई जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत अगर नोट्स बनाने से थोड़ा टाइम मिल जाए तो बच्चा आंसर भी बता देगा One hundred forty-four multiply 144 upon 48 multiply x divide 22 equals to 108 तो ये कितना होगा इससे डिवाइड होगा 3 टाइम्स कितना होगा 400 You are now unmuted. Good afternoon, Ajata. Good afternoon, ma'am. How are you, beta? I'm fine, ma'am. Okay, you have some doubts? multiply x Ma'am, multiply 1 You have some doubts? हमारे पास है divide 22 ma'am, today you said you will take organic chemistry from me. Okay. Just tell me what all doubts do you have in organic chemistry, or we should start with NCRT. Whatever you like. Ma'am, I would just like to have a gist of the chapter, ma'am. Pardon? I'd like to have the gist of the chapter, ma'am. The? Ma'am, like the brief on the chapter, ma'am. Okay. Should I go on with NCRT or just like that I should teach? What would you prefer? Ma'am, if it's helpful for JEE, then anything is fine. Okay, I'll go on with NCRT and then I'll elaborate whatever is required. Just 1 second. Yes. ये समझ में आया सर यार आपको अभी बताते हैं यहाँ तक समझ आया देखो 108 to multiply by 4 में करके हमारे पास 132 है और उसके बाद हम 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 5.5 है Just 1 second. बताओ बच्चों बात समझ आई बोलो बताओ कितना होगा आंसर अब देखो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता
Okay. So let's start with haloalkanes and haloarenes. First of all, if I talk about haloalkanes and haloarenes, what are these? Haloalkanes, Ma'am, yes, ma'am, I can't hear you. you can't hear me. Okay. Let me just refresh. 35 multiply 35 upon 35 की 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? Now, am I audible to you? Yes, ma'am. इसको तो ये Okay. So, if I talk about haloalkanes and haloarenes, what are haloalkanes? Haloalkanes are those alkanes in which one halogen group is attached, and haloarenes are those aromatic compounds where one halogen is attached. So, if I want to classify on the basis of number of halogen atoms, we can have monoalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, and all that stuff. And for arenes, we can have monohaloarene, dihaloarene, trihaloarene, and so on. Now, if I talk about the compounds, we have some primary compounds as in this. Primary compounds, that means the halogen is attached to 1 degree carbon. Secondary, halogen is attached to 2 degree carbon. Tertiary, the halogen is attached to 3 degree carbon. Understood? Yes, ma'am. Now, if I talk about allylic carbon is double bond, and then the carbon attached to halogen should be attached to some sp2 carbon as a double bonded carbon. This is known as allylic carbon. So, any halogen attached to allylic carbon is known as allylic halide. Same way, if we have a carbon attached to benzene ring, it would be known as benzylic carbon, and the halide attached to that carbon will be benzylic halide. So if I talk about the bonds, if the halogen is directly attached to this double bonded carbon, then it is vinylic halide, and if it is attached directly to the aromatic ring, then it is known as aryl halide. Understood? Or should I write it for you? Understood. Okay. Nomenclature, I am skipping this part because I guess you must be knowing all by yourself only. Yes, ma'am. So if I talk about the nature of CX bond, see, if I go for the starting of the organic chemistry, then basically it revolves around carbon. It revolves around carbon. So, can I say that whenever the reaction is there, so in that case we have either bond formation, bond cleavage, yes or no? Yes, ma'am. So, if I talk about the bond cleavage, then what will happen? 4.7 multiply 2 कितना होगा? फटाफट से बोलो. If I talk about bond cleavage, then suppose we have carbon and halogen bond. It can break in the way C dot X dot. It can break in the way C plus X minus or C minus X plus. Yes or no? Yes, This ma'am. is known as heterolytic fission, 11.7 equals to 63 की power x. and this is known as homolytic fission. अब देखो हमारे पास है 7 की पावर और 9. अगर बेस सेम है तो 7 की पावर को ऐड कर दो. Fine. So, if I talk about the nature of carbon and halogen bond, carbon and halogen bond is a polar bond for no doubt, and we will always find halogen to be slightly more electronegative. Slightly more electronegative. And carbon is
less electronegative. So there is less scope of C minus and X plus. Yes or no? Just note this down. अगर पावर सेम है तो बेस में जो रिलेशन है हम उसी को अप्लाई करते हैं पावर हमारे पास सेम है तो इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा 63 की पावर 15.2 दोनों साइड का कंपैरिजन करो x की वैल्यू कितनी होगी 15.2 बताओ बच्चों बात समझ आई आप बोलो Noted, ma'am. Okay. After this, if I talk, after this you have done less electronegative carbon halogen bond and everything. So next thing that comes into account is basically we have to go for okay. So this was about nature of carbon and halogen bond. This is a polar bond. And if I talk about bond strength, so carbon halogen bond length increases with carbon fluorine to carbon iodine. So can I say bond strength decreases from fluorine to iodine? As in carbon fluorine bond is way stronger than carbon bromine, carbon chlorine in between carbon iodine and everything. So can I say that this is because the small size of fluorine? Yes or no? As the size increases, bond strength decreases and bond length increases. Understood? Yes, ma'am. So that was all about nature of carbon halogen bond. You have any doubt related to this? No, ma'am. Okay. After this, we will talk about the methods of preparation of haloalkanes. See, you need to remember one thing. This is a trick kind of a thing. But in the whole organic chemistry, it is just like a snake. It is all interconnected. So, Yes. can I say that first chapter in the organic chemistry after introduction part is hydrocarbon? Yes, ma'am. Then we have haloalkanes Yes, ma'am. and haloarenes. After this we have alcohol, phenol Yes, and ma'am. ether. After that we have carbonyl compounds. देखो अपना अगर आपको चेक करना है कि And then carboxylic acid. तो आप क्या करो लेफ्ट हैंड देखो इस बात को समझ लो अगर कैलकुलेशन को Now can I say that hydrocarbon on oxidation will form alcohol and haloalkanes on oxidation will form alcohol. Then on oxidation of alcohol, carbonyl compounds will be formed. Yes or no? Yes, ma'am. Oxidation. And from carbonyl compounds, we will get carboxylic acid. Yes, ma'am. Oxidation. Now, same is reversed. 9 equals to 9 इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन If you will go for reduction of carboxylic acids or ester, you will find carbonyl compounds. If reduction of carbonyl compounds, you will find alcohol. On reduction of alcohol, you will find hydrocarbon or sometimes haloalkanes. Yes or no? Yes, ma'am.
Any doubt? Just note this down. If you are able to note this down and you are able to understand this, you will cover almost 30% of organic chemistry, which is a good part. अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाना मत अभी देखो आप एक काम करो एक काम करो कैलकुलेटर से भी सबकी मल्टीप्लाई करो कुछ वैसे तो तुम कर नहीं पाओगे लेकिन करो फटाफट से क्योंकि टाइम कम है अब तुम देखना जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना चलो पहले बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा कैलकुलेटर Noted, ma'am. Noted? Okay. So, now if I come to preparation of ये भी होगा ना एक काम करो इन सब पे सिंगल डिजिट को कन्वर्ट करो haloalkanes. Whenever you are revising organic chemistry, just make sure you are going to simplify in such a way that you remember the name of the chapters. If you remember the name of the chapters, you will remember the equations. Now, if I talk about haloalkanes, I need to prepare haloalkanes or haloarenes. What was the first chapter we read about? Hydrocarbon. So let's take hydrocarbon from hydrocarbon. Can you tell me that what is the mechanism for adding halogen to hydrocarbon? And it has been asked several times, at least once in 3 years it is asked about this question. This is V raised to the power 99 times important. आप एक बात बताओ 9 कितना कमेंट करो फटाफट से 9 मल्टीप्लाई 3 करो कितना होगा 27 अब देखो जब भी आप 9 की मल्टीप्लाई 3 में करो 4 में 5 में 6 में 7 में 8 जब आप इनकी टर्म में ऐड करोगे ना तो हमेशा हमारे पास डिवीजन 9 आएगा क्योंकि हमने 9 से मल्टीप्लाई Ma'am, NC mark करेगा. अगर हम 9 में किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा Almost which one? Oh, I am not getting you. Basically, we will go for free radical substitution. If I talk about some medicines, it is always written store in a cool and dark place so that there is no transfer of energy. Suppose there is a hydrocarbon CH3, CH3. There was chlorine and HCl. So it will react with this. It will form CH3 dot CH3 dot Cl dot plus Cl dot Cl dot. Now what will happen? This will remain like this. So can I say CH3 plus Cl dot 2Cl dot will go with CH3 CH2 Cl plus HCl. Fine. And so on it will go on. Now what is the question that comes in exam? That is, here we can have any halogen, chlorine or bromine, and it is the question is calculate
the total number of monohalogenated monohalogenated products including stereoisomers. Fine. First question I'll just explain you and then you have to do a few questions for yourself. Suppose this, and I want to check the number of monochlorinated products. One can be this chlorine, and rest all will repeat. Now this is not a chiral carbon, but yes, now this has become the chiral carbon. So 1 plus 2 monochlorinated products would be formed. Understood? Ma'am, I do not understand. Okay, basically you have to add chlorine in a hydrocarbon chain and you have to add only one chlorine. So how can you find the product? Ma'am, in this carbon chain, like we're adding chlorine in two positions only. Why not to the left side of the See, same we are position? adding chlorine. Chlorine can come over here, chlorine can come over here, and over here. Yes or no? Yes, ma'am. So If there'll it is be four coming more. here or here, it would be one as the same thing. Here Huh? or here, it would be one as the same thing. Yes or no? Yes. So I am considering this and this. This is chiral. It has become chiral after addition of chlorine, so there would be two products. One would be R configuration, the other one would be S configuration. Fine. Yes. Yes. Any doubt? Okay. No, ma'am. Do some questions now. Yes, try these 7 questions. Yes, ma'am.
Ma'am, it has fluorine in four positions, ma'am. Pardon? I mean, yeah, ma'am, four positions. Yes, correct. Are you sure? For second it is 4. Yes, ma'am. No, beta. See, if it will come over here, it would be same as if it is coming over here, here or here. Yes or no? It is somewhat like this. Yes, ma'am. I can see it like this, like this, like this. It is all the same. Can you Yes, see? ma'am. So similarly, can I say that if chlorine will come over here, it would be same as this, this and this? Yes, ma'am. So answer, and here it cannot come because 4 valencies are already fulfilled. So the answer will be 1. Second one is three, ma'am. I mean, third one See, is three. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So symmetry will come over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So as chlorine can come over here, here and here as well. 4 are these. This will be chiral. This will be chiral. So can I say 2 plus Ma'am, it will come down now, ma'am. The valence is already balanced. beta hydrogen will be removed and in lieu of that chlorine would become Okay. 2 plus 2 square, that is equal to 6. Try other questions as well. Fourth one is it only one, ma'am? Yes, for fourth one it is only 1. Fifth one is it a hexagon, ma'am? Yes. Six positions, ma'am. Say, are you sure? See, if it Yeah, is ma'am. coming over here, it would be same as 1, 2, 3, 4, 5. So answer is again 1. Ma'am, but no, ma'am. Like in a hexagon, we'll have like this ortho, para, and meta positions, no, ma'am. Beta, we In have ortho, meta and para positions. We have those for benzene, first thing. And secondly, ortho, meta, para is relative to someone. Like if I am saying I have this benzene ring, if I have chlorine, if I have another chlorine over here, it would be ortho because it is adjacent position. Here it would be yes, ma'am. meta and here it would be para. It would be relative to this very chlorine. So make sure we have another atom to compare that ortho, meta and para. Isn't it? Yes, ma'am. Try rest of the questions as well. Then we will do some more questions since this is a very important topic. Okay. I'll be just back in 1 minute. Fine. So,
Okay, Ajita, have you completed? Ma'am, 2, 4, and 3, ma'am. Okay, let's check. Here it can be 1. Now we have relative positions 2, 3, and 4. Now where we can have chiral carbon? Here we will not have chiral carbon on addition of chlorine. Here we will have chiral carbon. Here we will have chiral carbon, and here also we will not have. So basically it would be 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. So 2, 4, 6, 7 will be the correct answer. Understood? Yes, ma'am. Question number 7. Question number 7. This is the symmetry point. Here no chlorine can come. 1, 2. And here we have chiral carbon. So it would be 3. Try question number 7 now. Question number 8, sorry. Ma'am, 8 is also 3, ma'am. Pardon? 8 is also 3, ma'am. 1. Then again this would be same. We have 2, 3, 4. Here there will be chiral carbon and that's it. And after addition over here, then it will have the chiral carbon. So it would be 1 plus 1, 2 plus 2 square, 4. Answer will be 6. Should I give you some more questions for practice? Because this is very important type of question. Yes, ma'am. Okay.
Try these questions. Mom, should I do them now or is it my homework now? You have to do them now itself. Only then I'll be able to know that if you are thorough with it or not. Mom, is it 6, Mom, the 9th one? Ninth one. Let me just try and check. 1, 2, 3, 4, and this will be that. This will be parallel in addition to this. This will be addition to this. So answer is, see, I'll just show you by drawing this. If we have chlorine over here, fine. Now this has become chiral because different groups are there. So there will be 2. After this, we have chlorine. And we have like this. Again, this has become chiral. So there will be 2 isomers. Now, if we have chlorine, now it is not chiral, 1. And if we have CH3, CH2, Cl, then it is also not chiral. So answer will be 6. Correct. No. If it is over here, then it will become chiral from here also. So it would be 4 basically. So answer is 8. Try question number 10. Ma'am, we have to see for how many positions we can fix chlorine, no, Ma'am. Pardon? We have to see for how many positions we can fix chlorine, Yes, no, Ma'am. exactly. And this is a very frequent coming question. You can just check. Mom, but how did you get 8, Mom? Like, See, I had this one. We had 2 chlorine atoms. In this isomer, this is also chiral and this is also chiral. Understood? Ma'am, but chlorine positions can be only 6, Ma'am. Pardon? Chlorine positions can only be 6, Ma'am. Chlorine positions can be 6, but they have asked you how many different stereoisomers can be formed. How many number of monohalogenated products, including stereoisomers. Understood? Understood, beta? Yes, Ma'am. Question number 10. We'll have 5 positions for Are you sure? chlorine. There'll be 2 more isomers, Ma'am.
See, here or here, Right. it would be same as this. So we have only 3 positions. In 3 positions, here we will find chiral carbon. So answer would be 4. Understood? Yes, ma'am. Solve the other ones. Look for the symmetry part. Ma'am, for 11th one, there'll only be 2 positions for chlorine. No. Check it again. Ma'am, there's a symmetry between 2 squares, ma'am. So, There is symmetry between 2 squares, but we will have different positions. Like if I talk about this position, this position, this position, and this position, all are different positions, which would be same as positions over here. So how many positions did I have? 4. 4. After this will not be chiral, but this will be chiral. This will not be chiral, but this will be chiral. So how many positions we have? How many isomers do we have? 6. Understood? Yes, ma'am. Try question number 12, 13 and 14. Six, ma'am. 6. Okay, let's check. We have 2 symmetries in this. Like this and like this. 1, sorry, 2, 3, 4. Sorry. This will be a chiral atom. Chiral and answer. Yes, the correct answer is 6. Solve for question number 13. Complete for 13 and 14. Then we will discuss.
8 ma. 8. Okay, let's check. See, here there is no symmetry. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Now we have chiral carbon over here. Over here it would be there. Over here. Over here. Over here. 1, 2, 3, 4, 5. 9 plus 5, 14. 14 stereoisomers would be formed. Solve for question number 14. Done question number 14. Seven ma. Let I'm me not check. sure. 1, 2, 3, 4, 5, and that's it. 5. Understood? Yes ma. Any doubt? No ma. Okay. So let's move to the next part. We were trying to make methods of preparation of haloalkanes. So can you make a haloalkane with the help of hydrocarbon by Yes free ma. radical substitution? Okay. One more thing, that in any, if there is any bond formation, if I want to prepare something or I want to go for chemical reaction, there will be a bond cleavage. Yes or no? If bond Yes ma. cleavage, if we have both the carbon carbon atoms on each side, so is it possible to have heterolytic bond cleavage when there is no No ma. electronegativity difference? It will always, when there is no electronegativity difference, can I say that there will be no bond cleavage, no heterolytic bond cleavage? Because both of them would live happily. Yes or no? No Yes heterolytic ma. bond cleavage. So for hydrocarbon, for formation of haloalkane, I guess this is the only way, that is free radical substitution mechanism. Free radical substitution mechanism.
Now, before coming to the next chapter, this was just alkane. Suppose we had alkene, carbon, double bond, carbon, hydrogen, 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 hydrogen. In that case, fluorine, if you are adding fluorine, then it would come over here. So it would be C, C, Cl, Cl, H, 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 H. Understood? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. After this, we will have from alkene. If we want to prepare haloalkane, can be prepared by addition reaction. Now, you must have heard about that in carbon double bond carbon, hydrogen, hydrogen, carbon, hydrogen, 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 hydrogen. HCl can also be added. Yes or no? HCl can also be added or not? Yes, ma'am. So can I say that it can be both ways round? HCl can go towards this carbon as well as this carbon. Yes or no? Most of the times it is HBr, by the way. So how to decide whether the hydrogen will go on this carbon or this carbon? Can you tell me how you will decide? Markovnikov's rule, ma'am. Markovnikov's rule. What does Markovnikov's rule say? The carbon with less, the negative part of the Br minus will go to CH3 and then And H will go why? to C. Ma'am, Why it will go to CH3 part? ma'am, the negative part of the compound will go to the carbon with more hydrogens and the positive part will go to the less hydrogen. Uh, but why? Can you tell me? I To reach if the you are saying balance, this, just justify it, but that doesn't mean that you are right or you are wrong. ma'am, is it to get stability, ma'am? Yeah, Is it to get stability, ma'am? I didn't get you. Is it because of stability, ma'am? Yes, it is because of stability, but why that stability is more? Ma'am, Tell me, but why that stability is more? ma'am, the negative part will gain electrons, ma'am. So, But why? You have 5 minutes to answer that. Just think about it. Don't Google. Just think about it. ma'am, the hydrogen is positively charged, ma'am. It means it loses an electron, ma'am. So in order to make its valency shell stable, it goes and attaches with. No.
Why, ma'am? Think. I'm giving you 4 minutes more. Think. No, take your time. Just think about it. This will develop your understanding. 3 minutes more. Ma'am, I didn't hear you, ma'am. I'm saying I'm giving you 3 minutes more. This will develop your understanding if you understand this. If you are able to think about this, that why this is happening. This is happening, everybody knows. But why it is happening, everybody doesn't know. Does it have something to do with the dipole moment? You don't have to do anything with the dipole moment. Think. Okay, should I give you some hint? Yes, ma'am. Stability of carbocation. What, ma'am? Stability of? Carbocation in bond cleavage. I'm sorry, ma'am, I couldn't get your The stability hint of? is stability of carbocation during bond cleavage. Think. The compound becomes stable, ma'am. No, I didn't get it. Huh? I didn't get what you are trying to say. 1 minute more. Tell me. To remove the double bond, ma'am. To remove the double bond, no. See, if there has to be a bond formation, can I say there will be a bond cleavage in this part? Yes or no? Yes, ma'am. If this will break in heterolytic cleavage. Yes or no? Yes, ma'am. So we have two options, plus this side, minus this side. Minus this side and plus this side. Here there is 2 degree carbon, here there is 1 degree carbon. Where the carbocation will be more stable? 2 degree. 2 degree. So if 2 degree carbocation will be more stable, so can I say that this Br minus will go towards 2 degree and this H plus will go towards 1 degree? Yes or no? Minus will go towards plus? No. Yes, ma'am. Understood? So Markovnikov rule says that the halogen will go towards the carbon with less number of hydrogen
and hydrogen will go towards the carbon with more number of hydrogen, because that less the number of hydrogen, more will be the degree of carbon. Understood? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Just note this down in your language. I'm giving you 2 minutes for that. Noted, ma'am. Noted. Should I give you some questions? Ma'am, I'll do it at the end, ma'am. Okay. You have to calculate the major product. If I talk about the major product, then we have first one plus HBr, second HBr, third HBr in presence of CCl4 or something, plus HBr, fifth plus HBr, sixth, uh, solve these questions. Beta, if I will discuss these questions, it will develop your understanding as well. You will get to know that how the questions are to be done. Yes, ma'am. Ma'am, to the left side it's BR and to the right side it's H. Just solve all of them and then I'll draw them and then you can ask doubts. Okay. Okay, ma'am. I'm giving you 5 minutes to do these questions. Yes, ma'am. Okay.
Done? 1 minute, ma'am. Okay. Completed, ma'am. Completed. Yes, ma'am. So, calculate the major product. Here we have, it can be anywhere around. Are you able to see this color? Or should I Yes, change ma'am. with the darker one? No, ma'am, it's visible. Okay, HBR. It will be same from both the sides. Here, if you will see, this will have more number of hydrogen. This will have less number of hydrogen. That means bromine will come over here and hydrogen will come over. Yes or no? In this, it is all the same from all the sides. HBr. Understood? Yes, ma'am. Now, if I talk about fourth question, then it can be anywhere around, but there are chances that we will not find an hello alkane over here. Why? Because there is resonance going on. So no reaction or very less reaction. Here we have resonance plus resonance plus aromaticity. So there will never be any reaction. No reaction. Why? Unstable intermediate benzyne mechanism. This will have unstable intermediate. So this will be no reaction. Okay. So after this we have here. Here it is 3 degree. Here it is 2 degree. So hydrogen will come towards more number of hydrogen or less number of hydrogen. More number of hydrogen. So here it will be hydrogen. This will be carbon. Understood? Just note this Yes, ma'am. down if you want to. Only the third one I got wrong, ma'am. Third one. Third one is directly. Either you will have H this side or H this side. It would be same. Hexagon.
just tilting it. Oh, it's the same, ma'am. Yeah. Oh, then that is also correct. Okay, very good. So after this, before moving to the next part, I don't think next part would be completed. So I will give you Ma'am, a till when is the class, ma'am, today? pardon. Till when is the class, ma'am, today? It is still 5. 13 minutes are left. So, from hydrocarbons, they have done hydrogen halides, addition of hydrogen. Okay, one more thing is left. Now, if we have HBr plus R2O2 or any other peroxide, then it will not follow Markovnikov rule. In that case, it will have to follow anti-Markovnikov rule. Fine. In case of anti-Markovnikov rule, the products will be just opposite. And try to make the products of all these questions. In case of HBr R2O2, Ma'am, completed, ma'am. completed. Should I discuss? Yes, ma'am. Okay, it can be somewhat like this. Here it would be same. In this case, it would be opposite. It would be H over here, bromine over here. Here it will be same. Here no reaction, very less reaction again because of resonance. Here there will be no reaction due to unstable intermediate formation. In this case, it would be reversed. BRH. Understood? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. So before we will not continue with the chapter, but I will give you the introduction about reactions. Like suppose all of a sudden a question comes and we are not able to get at what type of reaction would be there, what all can be done. Like if we are able to make guesses in organic chemistry, it would be of great help because we are not able to remember everything, isn't it? Yes, ma'am. So, if we have different types of reaction: substitution, addition, elimination.
Elimination occurs mainly when there is only single bonds, no double bonds in that compound. Only single bonds, or sometimes single pi bonds. Single pi bonds sometimes. Now, if I talk about substitution, in case of substitution, there will always be single bonds. Only single bonds. Why? If we have to break one sigma bond and make another new sigma bond, then you should know that since sigma bond is always stronger than pi bond, so when we will try to give energy, it is not that rule that sigma bond will break because we are trying to break it. Obviously not. Since the energy of pi bond is low, pi bond will break and not sigma bond, and it will turn into addition reaction. So substitution occurs only in case of single bonds or pi bond in aromaticity. If it is an aromatic compound, in that case there can be substitution, benzene ring or something. But just for normal compounds, there would be no substitution for alkenes or alkynes or something. Pi bond in aromatic compounds. In case of addition, we will have always at least one pi bond should be present. Understood? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Just note this down. So let's wind up the class for today. Yes, ma'am. Have a nice day. And it is always appreciable if you are regular into the class. It will be, did you find somewhat this class helpful? Yes, ma'am. So, if you want this complete batch capsule IT to be beneficial for you, you should attend classes. In case of any timing issue, you can always talk to the management team one day before or 2 days before that. If it is feasible, that you can change the timing. If there would be feasibility, they are surely going to help you out. But try to make best use of it. Okay, Ajita? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am.